बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये लेसन 21 है रिगार्डिंग टॉफल कोर्स फॉर द बिगनर्स। आज हम टेक क्वेश्चंस के टॉपिक को कवर करेंगे। सो डायरेक्टली जंप इनटू द लेसन। सो इट्स अ टेक क्वेश्चन. In a tag question, the speaker makes a statement but is not completely certain of the truth. So he or she uses a tag question to verify the previous statement. टैग क्वेश्चन में जो स्पीकर होता है वो अपनी कही हुई स्टेटमेंट के बारे में श्योर नहीं होता कम्प्लीटली. सो इन ऑर्डर टू वेरीफाई वो एक क्वेश्चन वर्ड यूज़ करता है एट द एंड ऑफ हिज सेंटेंस, जो हम सब इस्तेमाल करते हैं बट हमें क्लैरिटी नहीं है हम उसको कहते क्या है और उसका इस्तेमाल किस तरीके से होता है. सेंटेंसेज यूजिंग टैग क्वेश्चंस should have the main clause separated from the tag by a comma. ये राइटिंग स्ट्रक्चर में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आप टैग क्वेश्चन लिख रहे हैं तो आपने मेन क्लॉज को टैग क्वेश्चन से कॉमा के थ्रू सेपरेट करना है. द सेंटेंस विल ऑलवेज एंड विद द क्वेश्चन मार्क, ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ क्वेश्चन, सो इट विल एंड विद द क्वेश्चन मार्क इन द एंड. दीज आर सम ऑफ द रूल्स जब आप टैग क्वेश्चंस को मेक करेंगे. नंबर 1, use the same auxiliary verb as the main clause. If there is no auxiliary, use do, does or did. अगर आपके main clause के अंदर auxiliary मौजूद है तो यही auxiliary आपके tag question के अंदर use होगी in order to make a tag question. In case there is no auxiliary तो आपने do, does और did को इस्तेमाल करना है in your tag question. Second point, if the main clause is negative, the tag is affirmative. If the main clause is affirmative, the tag is negative. अगर आपका main clause जो जिस स्टेटमेंट के बारे में आपकी श्योरिटी नहीं है अगर वो नेगेटिव है तो आपका जो टैग क्वेश्चन होगा दैट मस्ट बी पॉजिटिव. इन कंट्रास्ट अगर आपका मेन क्लॉज पॉजिटिव है तो उसका जो टैग क्वेश्चन बनेगा दैट मस्ट बी नेगेटिव. रूल नंबर 3 सेज डोंट चेंज द टेंस. अगर आपका मेन क्लॉज जिस भी टेंस में मौजूद है आपका फॉलोइंग टैग क्वेश्चन शुड ऑलवेज बी इन द सेम फॉर्म ऑफ टेंस. रूल 4 सेज यूज द सेम सब्जेक्ट इन द मेन क्लॉज एंड द टैग. द टैग मस्ट ऑलवेज कंटेन द सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ द प्रोनाउन. आपका मेन क्लॉज में जो सब्जेक्ट है दैट हैज़ टू बी इन कोरिलेशन विद द टैग क्वेश्चन. एट द सेम टाइम आपने सब्जेक्ट फॉर्म ऑफ प्रोनाउन यूज़ करनी है इन योर टैग क्वेश्चन. Furthermore, rule number 5, negative forms are usually contracted as in this form. If they are not, they follow the order auxiliary plus subject plus not. For example, he saw this yesterday. Did he not? So this is the main clause of the sentence followed by a comma to separate main clause from the tag question. इन केस यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑक्सिलरी नहीं है तो हमने डेड इस्तेमाल किया बिकॉज इट्स द सिंपल पास्ट टेंस फॉलोड बाय द सब्जेक्ट विच इज़ ही. एंड देन आपने चूँकि ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है तो द टैग क्वेश्चंस विल बी नेगेटिव. सो आपने इसको नेगेटिव बनाया विद द फॉर्म ऑफ नॉट. अगेन द सेंटेंस एंड्स विद क्वेश्चन. ही सॉ दिस यस्टरडे. उसने ये कल देखा था. डिड ही नॉट? क्या उसने नहीं देखा? तो दैट्स हाउ द सेंटेंस इज मेड. Next rule says there is, there are, and it is forms. These forms contain, and it is forms contains a pseudo subject, so the tag will also contain there or it as if it were a subject pronoun. अगर आपके main clause में ये form है there is, there are and it is, तो फिर आप which are the pseudo subjects तो आपने इनको अपने subject pronoun में use करना है in case of your to make the tag question. Next rule says the verb have may be used as a main verb. I have a new car. Or it may be used as an auxiliary. John has gone to class already. When it functions as a main verb like here, in case of American English, the auxiliary forms do, does or did must be used in the tag question. अगर आपका main verb में have मौजूद है in your main clause, तो as per American English rule, in order to make that have a tag question with this main clause आपने do, does और did को इस्तेमाल करना होगा to make the tag question. अब हम इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट, there are only 28 days in February. मैं यहाँ पे स्टॉप करती हूँ. ये कॉमा है, ये सारा आपका मेन क्लॉज है. इसको हम एक बार स्टडी कर लेते हैं. ये आपका ऑक्सिलरी है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस है. तो आप जब इसका टैग क्वेश्चन बनाएंगे तो इट हैज़ टू बी नेगेटिव. सिंस इट इज़ अबाउट
प्लूरल विच इज़ ऑक्सिलरी. तो हम इसको कैसे आंसर टैग क्वेश्चन करेंगे, इसमें टैग करेंगे क्वेश्चन को आर नॉट देयर. देयर आर ओनली 28 days in February. सिंस पॉजिटिव तो नेगेटिव बनाएंगे आर नॉट देयर, और लिखने में हम इसको इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे आर्ट देयर. हम इस तरीके से इसको अपनी कॉन्वर्सेशन में भी यूज़ करेंगे. सेकेंड एग्जाम्पल, इट्स रेनिंग नाउ इजंट इट. अब इट्स रेनिंग नाउ मेन क्लॉज पॉजिटिव, तो आप इसको नेगेटिव करेंगे टैग क्वेश्चन इजंट इट. इट इज़ंट रेनिंग नाउ, अब आप कह रहे हैं अब मेन क्लॉज आपका नेगेटिव है, इट इज़ंट रेनिंग नाउ, तो इट का टैग क्वेश्चन पॉजिटिव होगा इज इट. इट्स हेल्पिंग, वहाँ पर आपके पास ऑक्सिलरी मौजूद है और आपने सब्जेक्ट को फॉलो कर दिया विद द क्वेश्चन मार्क. थर्ड एग्जाम्पल, द बॉयज़ डोंट हैव क्लास टुमारो. अब अगैन ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव विल बी डू दे. दिस इज़ द पॉजिटिव वन. आपने ऑक्सिलरी टू उठाया फॉलोड बाय द सब्जेक्ट दे, because these are positive plural subject. Another example, you and I talked with the professor yesterday. It's a positive question, positive main clause. Didn't we? अब yesterday की बात हो रही थी, so इसमें हमने did इस्तेमाल करना है, और इसमें multiple आपका subject है, plural है, तो आपने we use किया है followed by question mark. I hope you are all with me so far. Next example, you won't be leaving for another hour. This is negative main clause. So the answer, so the tag question will be positive. Will you? This is helping verb will followed by subject you. And then question mark in the end. Jill and Joe have been to Mexico. This is positive main clause. Haven't they? Since आपने देखा यहाँ पर जो have है आपके पास मौजूद है, तो आपने इसको negative बनाया haven't they. You have 2 children, right? डोंट यू. अब यू आपका प्लूरल सब्जेक्ट है तो आपने उसके साथ यहाँ पे आपके पास मेन वर्ब में जब हैव हो तो इंग्लिश, रिटन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश में आपने इसमें टैग क्वेश्चन बनाते वक्त हैव अगर वर्ब है तो आपने डू का इस्तेमाल करना है, तो डोंट यू. इन ब्रिटिश इंग्लिश यू वुड बी करेक्ट टू से यू हैव 2 चिल्ड्रन, हैवेंट यू. बट जस्ट आपको ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि जब आपने हैवेंट यू कह रहे हैं तो दैट्स जस्ट अबाउट इन ब्रिटिश इंग्लिश, बट इन अमेरिकन इंग्लिश यू आर सपोज टू मेक अ टैग क्वेश्चन विद द वर्ड डोंट. सो दैट्स ओनली चेंज इन द डायलैक्ट्स फॉर दैट मैटर. इंग्लिश और अमेरिकन दोनों सेंटेंसेस की आपको क्लैरिटी होनी चाहिए, एंड यू कैन यूज़ ईदर वट एवर यू मेक फील comfortable about. More information on TOEFL, which tests standard American English. You must use a form of do if you have in the main, if there is a have in the main clause, in the main verb, as the main verb in the main sentence. तो जिसको हमने पहले भी एक बार स्टडी कर लिया. अगर आप TOEFL को अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपने इसमें ये मिस्टेक नहीं करनी है. then you have to make do, you have to add do in your tag question. For example, she has an exam tomorrow. So in that case, she is of course singular, so you will go for doesn't she. But if you are supposed, and this is in American English because you are about to attempt in a TOEFL course exam, or otherwise she has an exam tomorrow. You can say hasn't she in case you are talking about in a British English. You are writing considering British English in your mind. So that's the only difference. This was all about the tag questions, rules and regulations, how to use. You should know what main clause and the tag question is. Let's jump into this exercise and make some tag questions. Stop and pause your video here. इन blanks को fill करें. आपके पास ये सब main clauses दिए हुए हैं followed by comma, and you have to make a tag question. आपने इसमें अपना ऑक्सिलरी देखना है और फॉलोड बाय सब्जेक्ट. डिपेंडिंग अगर आपका मेन क्लॉज पॉजिटिव है तो आपका टैग क्वेश्चन नेगेटिव होगा, और वाइस वर्सा. इस पर और जिन लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया है उनके लिए हम आंसर को एक बार देख लेते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन वॉज यू आर गोइंग टू स्कूल टुमारो. इसको देख लेते हैं, ये पॉजिटिव क्लॉज है, सो इन दैट केस टैग क्वेश्चन मस्ट बी नेगेटिव. आर्नट यू, ये जो एन और टी ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है फॉर द नॉट. Second, Gary signed the petition. This is positive. Didn't he? Because it's a past tense, so it is didn't he. Third question, there is an exam tomorrow. Positive, so it will be negative tag question. Isn't there? Exam is singular, of course. Fourth question, Beverly will be attending the university in September. This is going to be a positive future tense. So, won't she to make it negative. Question 5, she's been studying English for 2 years. This is positive. Hasn't she? Now hasn't she I'm writing because
यू सी शी हैज़ बीन स्टडिंग एंड दिस इज़ अ ब्रिटिश इंग्लिश. और यू कैन, अगर आपके पास हैज़ है तो आप इसको डजंट शी कर सकते हैं, बिकॉज देन इट विल बी एन अमेरिकन इंग्लिश. Okay, next, if it sure is sunny today, this is positive, isn't it? Followed by tag question. Seventh, he should not stay in bed. Shouldn't he? हमने इसको नेगेटिव बनाया and he is a subject. You can't play tennis today. This is negative. So can you? This is a positive tag question. There aren't any peaches left. Are there? This is a positive tag question. आपने सिर्फ auxiliary उठाना है और आपने फॉलोड करना है विद द सब्जेक्ट. आपने सब्जेक्ट भी एग्जैक्टली वही यूज़ करना है जो आपके मेन क्लॉज में है. वी हैव सीन दैट मूवी. पॉजिटिव. हैवंट वी? Again, you are not sure have you seen or not. So this was all about tech questions. If you like the video, subscribe my channel, like and share with your family and friends. Thank you.